पता है आज गोवर्धन पूजा है एंड वी हैव अ स्मॉल एक्टिविटी टू डू फॉर दैट. तो वी विल बी मेकिंग अ गोवर्धन पर्वत. तो उसमें आपको सबसे पहले क्ले चाहिए. अगर आपके पास इनफ क्ले ना हो सेम कलर का तो आप 2-3 कलर्स को मर्ज भी कर सकते हैं एंड गिव इट अ मार्बल इफेक्ट द वे आई हैव. एंड उसके बाद भी अगर आपके पास इनफ क्ले ना हो तो आप उसे एक बॉल के ऊपर स्टिक कर सकते हैं. राइट. सो इन दिस वे हमारा पर्वत बन जाएगा. तो उसके बाद उसे डेकोरेट करेंगे. तो फॉर दैट वी विल नीड एनी पेपर. ब्राउन ज़रूरी नहीं है, यू कैन इवन यूज़ अ न्यूज़पेपर. एंड वी विल रोल इट इनटू अ स्टिक. In this manner we have it. We have a simple paper. We gradually roll it into a stick. We have Fevicol and we glue the end. Sticks ready. Then we will need a green paper, a rectangular piece. Fold it into half. The place it is folding, keep it near ear. Keep the open ends away from you. We need a pencil and a scale and draw a line a little further away from the end, the open end, and we drew a line. Then with the scissors we have to make cuts in this manner. They should touch the line, do not go far beyond it. So we are done. It should look like this, right? Then we take the stick. First of all, we glue the ends, the place we had left. We glue the open part. Then we take the stick, we apply a little glue over there and put the pencil marking part. The cut part should be on the top and glue the bottom. And then just and it should look somewhat like this. Okay. So and then you can just decorate your Govardhan Parvat the way you like. For example, just the trees. I have some flowers that I had already made, so just place them anywhere you like. You can use anything that you like will fit in the Govardhan Parvat, and it is ready.